जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। ये स्थल है रमणीति के सामने श्री गया प्रसाद जी बाबा की समाधि स्थल है। यहाँ ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की विशाल प्रतिमा विराजित है, जाको श्रद्धालु लोग प्रतिदिन आके अभिषेक करे हैं। और ये गिरिराज तलैटी है और ये सभी ग्वाल वाल बैठे हुए हैं, ठाकुर सेवा में सभी प्रस्तुत रहते हैं। हमारे मित्र, बंधु, सखा, यजमान के माध्यम से जो नोएडा निवासी हैं और इनको नाम है दिनेश लवानिया, जो नोएडा में रहते हैं, और उन्होंने ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की प्रीत भक्ति की प्राप्ति के लिए आजीवन ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी को, भागवत जी को श्रवण कराने के लिए हमें नियुक्त किया है। आज से हम 11 अध्याय प्रतिदिन ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रवण कराएंगे। यहाँ ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी के अनुष्ठान के प्रारंभ में दीपक प्रज्वलित किया और अब ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में ठाकुर जी को प्रसन्नता प्रदान करने हेतु और अपनी प्रसन्नता बनाए रखने हेतु यजमान के सकल लक्ष्यों की, सकल मनोरथ की पूर्ति के लिए 11 अध्याय प्रतिदिन भागवत जी के मूल पाठ के आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त होंगे। और ठाकुर जी श्रवण करें और हमारे यजमान पर, हम पर, सभी पर कृपा बनाए रखें। ओम अश्व श्रीमद्भागवताक स्तोत्रमन्तश्च नारद श्रीवैति छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ब्रह्म बीजं भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम मम यजमानस्य श्री वशिष्ठ गोत्राय श्री दिनेश लवानिया नामने यजमानस्य तस्य सकल मनोरथ निर्विघ्न परपूर्ण सिद्ध्यर्थे अभिष सिद्ध्यर्थे जपे पाठे विनियोगः। ओम नारद ऋषे नमः श्री वैति संश्री नमः मुखे श्री कृष्ण परमा देवताय नमः हृदय ब्रह्म बीजाय नमः गुहे भक्ति शक्तये नमः पादेयो ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नाभो श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठ विनोगाय नमः सर्वांगे। ओम क्लाम हृदयाय नमः ओम क्लीशेश्वः ओम क्लूं शिखाय वकटः ओम कलय कवचाय होम ओम क्लौ नेत्रस्त्राय वकटः ओम कलहस्त्राय फटः ओम क्लां उष्टाभ्यां नमः ओम क्लीतजनेभ्यां नमः ओम कुलमदमाभ्यां नमः ओम कलमनामिकाभ्यां नमः ओम कलौ कनिष्काभ्यां नमः ओम कलह कर्तकपृष्ठाभ्यां नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे मौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगल कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तानस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं दैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमो अध्याय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
नैमिषेषूतमाशीनमविवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद कुतलः शौनको ब्रवीत्। शौनकोवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटशूरसमप्रभा हि कथासारं मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानाभिरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायमोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशाक्रान्तश्च तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवेच्छेय पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वतसाधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगदुर्लभम्। श्रुतवाच प्रीतिः शौनकचेत्येते ह्यातो वच्म विचार च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारो भयनाशनं। भक्तयोगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनेन सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। एतस्माद् परं किञ्चन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्तते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्या कुशलासुरा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाञ्जहासहो। अभक्तास्ता च विज्ञाय नाददौ सा कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। रागमोक्षं तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मृता सत्यलोके तुलां वदध्वातो लयतसाधनान्यजः। लघून्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् दार्शिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाच्च वनश्चद्दो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन सुतं चेत्तद् सर्वथा मुक्तदायकं सनकाद्य हि पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्युतमेतत्स्वरेण सप्ताह श्रवणाविधिः कुमारस्तस्य भाषतो। शौनकोवाच लोकविग्रह मुक्तश्च नारदश्चास्तरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैषः। श्रुतोवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तयुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्यचो। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सतसङ्गातं समायाता ददसोस्तत्र नारदम्। कुमारावचुः कथं ब्रह्मण दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् परतं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचेत्तोषि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचतं वद कारणम्। नारदोवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न पश्यं कुत्रचिच्छर्मो मनस्सन्तोषकारकं करणाधर्ममित्रेण धरेयं वादतादुनो। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भौरिणो जीवा वराकः कूटभाषणो। मन्दहासु मन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्यता पाखण्डनिरतः सन्तो विरक्तः सपरिग्रह। तरुणी प्रभुता गृहे शालको बुद्धदायक कन्या विक्रयणो लोभा दम्पतीनां च कलकनम्। आश्रमा यवनहिरोद्धा तीर्थानि सरतस्तथा देवता यतना नत्र दुष्टे नष्टान् भूरिश। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सदक्रियो निराकलदादा वानलेनाद साधनं वश्मतां गतम्। अट्टशूला जनपदः शिवशूलादिजातया कामिन्या केतशूलेन सम्भवन्ति कलाविहो। एवं पश्यन् कलिर्दोषन् पर्यटन् वनीमहं यामनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। तत्राचर्यं मया दृष्टं सूयतं तन्मुनीश्वरा एकाद तरुणी तत्र न सन्ना खिन्नमानसः। वृद्धौ दौ पततौ पाशरवे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ते प्रबोध्यन्ते रुदती च तयोपरः। दशदेशो निरीक्ष्यन्ति रचितारं निजं वपो बीज्यमाना सतः स्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दृष्टा दूराद् गतः सोऽहं कौतकेन तदन्तकं मां दृष्टा चोत्तता बाला विह्वला च ब्रवीद च। बालोवाचः भोः साधोक्षरं तिष्ठ मच्चिन्तामपनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवदभूरि भवतो दर्शनं तरः। नारदोवाच काष्ठं काव्यमौचे मा नार्यः काः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याताय मौमे तनयौ मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरौ।
गंगाद्यः सरितश्चेम मदसेवा तं समागता तथापि न च मेषेया सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मदवार्तां सचित्तस्तं तपोधना वार्तामेव तथाप्यस्ति तां सत्ता सुखमावह उत्पन्ना द्रवणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गोर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरा कलिर्योगात् पाखण्डै खण्डताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जातहं यवती सम्यक् प्रेषरूपा तु साम्प्रतम् यमौ तु सैतावत् प्रस्तौ मे क्लिश्यता क्षमाता इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मयः जलठत्तं समायातौ तेन दुःखेन दुःखता साहं तु तरुणैकस्मास्तौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां स चारित्वा दैपरित्तं कुतः स्थितं घटते जलठा माता तरणौ तनयावति यथा शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा बद्धयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारदोवाच ज्ञानिनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानगे नावसादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति श्रुतोवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्मुचे मुनिचुरा नारदोवाच तृणस्वावेतः बाले योगोऽयं दारुणा कली तेन लोप्ता सदाचारो योगमार्गस्तपांस च जनागासुरायन्ते साठय दुष्कर्म कारणा इह सन्तो विषीदन्ति प्रहसन्ति ह्य साधवः दत्ति धैर्यं तु यो धीमः सुधीर पण्डितोऽथवा अस्पृश्यान्नवलोकेयं शेषभारकरीधरः वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मङ्गलं चापि दृश्यते अस्पश्यानवलोकेयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मङ्गलं नापदश्यते न त्वामपि सुतहि साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैः जरजरत्तेन संस्थितः वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणीन् वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिनत्यतयत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान्न जरामपि मुञ्चिता किञ्चिदात्मा सुखेनेह प्रशोत्तरमन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यासचे कले प्रवत्ते तु कलौ सर्वो सारा कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरणाप्यो धर्मा कथमीच्यते इमं मे संशयं चेन्दी तद्वाचा सुखता सम्यहम् नारदवाच यदि पश्यस्त्वया बाले प्रेमता श्रवणं करो सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्ता स्वपदं गता तरणात् कलरायात् सर्वसाधनबाधको दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्चरणं गता नामया मारणीयोऽयं सारङ्ग एव सार्वको यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एककारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुराता स्थापितवान् सकलजानां सुखाय च कुकर्माचरणा सार सर्वतो निर्गतो धना पदार्थः संसता भूमौ बीजहीना सुखायथ विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारता कणलोभेन कथा सारस्वतो गतः अत्युग्रभूर कर्माणो नाशकारो रवाजना ते प्रतिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा ते प्रतिष्ठन्त तपसि तपसारस्ततो गतः मनसच्चा जया लोभा दम्भात् पाखण्ड संश्रया सस्तनव्यसनाच्चैव ध्यान योग फलं गतम् पण्डितास्तु करत्रेण रमन्ते महिषाय वा पुत्रस्योत्पादने दच्छा मुक्त साधने नहीं विष्णवतः कुत्र संप्रदाय परहासरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारा स्थले स्थले अयं तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाच्च सहते निकटे स्थिता सूतवाचो इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तरुचे वचो भूय सूयितां तच्च शौनका भक्तिरुवाच सुरक्षे त्वं हि धन्यो श्रीमद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयते जगते माया यश कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ओ सती श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनाथ समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः पाठफलः श्री कृष्णः चरणारविन्दमर्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय नारदवाच व्यथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरागतं श्रीकृष्णचरणां भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालता गोपसुन्दर्या स कृष्ण क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया आहूतस्तु भगवान् यातनी च गृहीष्यपि। सत्य
इत्यादि त्रियुगे बोधो वैराग्यो भक्त साधको कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारणी यदेने चित्त सद्रूपां तां ससर्जः परमानंद चन्मूर्ति सुंदरीं कृष्ण वल्लभां भदद्वांजलिं तया पृष्ठं किं करोमि च कदा त्वां तदाज्ञः पयद कृष्णो मदभक्तान् पोषयेत च अङ्गीकृतं तया तद्वै प्रसन्नो अभूद्दरिस्तदः मुक्तिं दासीं ददौ तोभ्यं ज्ञानवैराग्यकाव्यमो पोषणं शेन रूपेण वैकुण्ठे तं करोसि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं तया कृतम् मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संसता कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डामय पीडितो तदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव शाश्वता त्वायापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रिकत्यात एमौ च पाशरवेश्वस्यैव रच्युतौपेक्षत कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तामुञ्च तमुपायं चिन्तयाम्यहं कर्णा सद्यसा कोऽपि योगो नास्ति परानने तस्मै स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्यधर्मा तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महुष्यमानः तदा नाहं हरिर्दासो लोकतां नापवर्तये त्वदन्विता च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसदभक्ति सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्त केनासं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयो न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सरोऽपि वा भक्तयुक्ता मनस्कानां स्पर्शेन प्रभुर्भवेत् न तपोभिन्न वैदेच्च न ज्ञानिनापि कर्मणा हरिर्हि साधते भक्ता प्रमाणं तत्र कोऽपि कारणं सन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्ता कृष्णः परायस्तथा भक्तिद्रोहः कराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पराभक्तावनिन्दका अलं वितैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखै अलं ज्ञानकथालापै भक्तिरेकैव मुक्तिदा श्रुतोवाचः यदि नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टसंयुक्ता नारदं वाक्यं ब्रवीद् भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् मुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपारुणा त्वया साधो मदवादाध्वंसताक्षणात् पुत्रयो चेतना नास्ति ततो बोधय श्रुतोवाच तस्यावचा समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गता तयो बोधनमारेवे करागेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानं प्रबुद्धतां शीघ्रं वैराग्यप्रबुद्धतां वेदान्तघोषै च गीतापाठै मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथञ्चित् चौथतौ बलातः नेत्रिरन्वलोकन्तौ जम्बन्तौ सालसाभो भगवत्फलतः प्राय सुखकाष्ठसमङ्गकौ शतक्षामौ तो निच्छैव पुनः शापोपरायणौ ऋषिचिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्नति गोविन्दं स्मारयामास भार्गवा व्योमवाणी तदैव गुणमारिषेखिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयो एतदर्थं तु शतकर्मः सुरसे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधवः साधवोचना शतकर्मणैकते तस्मिन् सनिद्रा विद्यतानयो गमिष्यति क्षणाद् भक्ति सर्वथा प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति भुवनः नारदोवाच अन्याकाशवाण्यापि गोपयत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मया त्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया श्रुतोवाच तत्द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनितीर्थतीर्थं विनिष्क्रम्य प्रच्छिन्न मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वै किञ्चन चित्यः नोच्यते असाध्यं केचनं प्रोचर दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूता तथा नेतो के हस्तन्तो पलायता हाहाकारो महानाशे त्रिलोके विस्मयावहो वेदान्तघोषे च गीतापाठैव बोधतं भक्तिज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रकं यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे जपञ्जना योगना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तदगतं शक्यते भक्तो मित्रैरिह मानसै एवमर्षगणैः पृष्ठे निर्णयोक्तं दुरासदं तदा चिन्तातुरासोता बद्रीवनमागतौ तवच्च रामचात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयो ओम तावद्य दर्श परतः सनकादीन मुनीश्वरान् कोटिशूरा समभाषानुवाच मुनिसत्तमः नारदवाचः इदानीं भूरभाग्येन भवदभिः सङ्गमो भवतः कुमारा ब्रूवतां शीघ्रं कृपां तत्कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुशता पञ्चहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजा तदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामितरसुरमत्ता कथामात्रैकजीवना हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अधाकाल समाधिष्ठा जरायुष्मान् बाधते येषां भूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ नवततौ साध्यो यद्गपाता परं गतौ अहो
भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रह तु कर्तव्यो मयि दीने दया परि अशरीरः गिरोक्तं यत्तत् किं साधनमुचितम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्ति ज्ञान विरागाणां सुखमत पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारावचुः मा चिन्तां कुरु विद्येवर्षे हर्षं चित्ते समाभव उपाय सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्णदासानां गृणी योग भास्कर त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्तर्थ मनवर्तना कर्ते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा यथेभिर्वहवो लोके पन्थानं प्रकटे कथा श्रमसाध्या च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदा वैकुण्ठसाधकः पन्था सदु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत् पुरा तदुच्यते श्रश्चादस्त्रचित्तावसन्नदि द्रव्ययज्ञ तपोयज्ञ योगयज्ञ तथा प्रेष्वाध्याय ज्ञानयज्ञ च ते तु कर्म विसूचको तत्कर्म सूचको नूनं ज्ञानयज्ञ स्मृता बुधैः श्रीमद्भागवतालापो सदु गीता सुखादभि भक्तिज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् भजिष्यन्ति देयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्विका एव ज्ञानवैराग्य संयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावह पृथगेहं पदजनं तथा कीडं करिष्यति नारदोवाच वेदवेदान्तघोषे च गीतपाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानवैरागाणां नोदतिष्ठत्यकं यदा श्रीमद्भगवतालापत् तद्गतं बोधमेषति तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शन विलम्बो नाथ कर्तव्य शरणागतवत्सला कुमारोचो वेदोपनिषदां सारा जाता भागवते कथा अत्युत्तमा ततो भाति वदगभूता फलाकति आमूलाग्रहण सस्तेष्टन्नास्तेन स्वादते यतः सभूय सम्पदगभूता फले विश्व मनोहरात् यथा दुग्धे सतं सर्पेण सुधाय उपकल्पते पदगभूतं हि तदगभ्यं देवनां रसवर्धनं चेक्षुणामपि मध्यान्तं शर्करा व्यापतिष्यति पदगभूता तथा मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म समेतं भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशतां वेदान्त वेद सुष्णाते गीताया प्रकर्तरे परितापवती व्यासे मोह्यत्या ज्ञान सागरे तदा त्वया परा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणा शब्दो निर्बाधो बादरायण तत्र ते विस्मयाकेन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदवाच यदर्शनं च विनहान्त शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवर्धितानाम् निःशेष शेष मुख गीत कह कथे कपान प्रेमो प्रकाशक तये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविदाय हि तदोदयते विवेक। ओ सत्य श्रीपद पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नर संवादो नाम द्वितीयोऽध्याय पाठफलः श्रीकृष्णः चरणारविन्दम् अर्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्याय नारदवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रगतोज्ज्वलं भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नता कुत्र कार्यो मया यज्ञस्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियदभिर्दवसहीशाभ्या श्रीमद्भागवती कथा को विदस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। कुमाराचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकने गंगाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकं नानारसगणे ज्येष्ठं देवसिद्धेन सेवितं नानात्रव्रताकीनं नवकोमलबालकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मासु सौरभं यत् समीपस्थजीवानं वेरं चेतसिनये स्थितं ज्ञानयज्ञस्तया तत्र कर्तव्यः प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति परस्तं निर्बलं चैव जराजीर्ण कलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्तादिकं भजेत कथा श्रद्धं समाकर्ण्य तत्र कं तरुणायते। सूतवाच एवमुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं तदा गंगातटं समाजगमो कथापानाय सत्वरा यदा तयाता सतं चेतो तदा कोला हलोप्यभूता भूर्लोके देवलोके च भ्रमलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूष पानाय रसलम्पटा धावन्तो अप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवो भृगुवसिष्ठ च वन च गौतमो
मेधातिथिर्देव बलदेवरातौ रामस्तथा गाधसुतश्च साकलो मकर्णपुत्रात् जपे प्रह्लाद योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छाया सुखो जलजनौ मुख्य सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्रशिष्य स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्तः वेदान्तानि च वेदा च मन्त्रसन्ता समूर्तया दश शतपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययोः गङ्गाधा सरितस्तत्र पुष्करादि सरासजा क्षेत्राणि च दश सर्वा दण्डकादय वनानि च नगादयो यस्तत्र देवगन्धर्वदानव भूत्वा तत्र नायातन् प्रभु सम्बोध चानयता दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तम कुमारा बन्धुता सर्वेण सेदु कृष्ण तत्पर कृष्णवाच वैष्णवाच विरक्ता च न्यासनो ब्रह्मचारिणां मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थिता एकभागे ऋषिगणा तदन्यत्र दवौघस वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यथा जय शब्दो नमः शब्द संघशस्त्रसदैव च चूर्णलाजा पशूनां निक्षेप समहानभूत विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायक कल्पवृक्ष पशूनस्तान् सर्वास्तत्र समाकरन् सूतवाच एवं ते तस्वेकशेतेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुच्यते स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारौचुः अथ देवन्नते अस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजाय यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिं करतले स्थिता सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थो अष्टादशसहस्रो द्वादश स्कन्धः संहिता परिच्छेद संवाद शृणु भागवतं च तदा तावत् संसार चक्रेऽस्मिन् भ्रमते अज्ञानतापमान यावत् कर्णागता नास्ति सुखशास्त्र कथा क्षणं किं सुतैवभिः शास्त्रे पुराणे च भमावहि एकं भागवतं शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे यत् तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधा सहस्राणि वायपेय शतानि च सुखशास्त्रकथाया च कलां नरहन्त षोडशी तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाय यावन् सूयते सम्यक् तावत् श्रीमद्भागवतं हरेः न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकं सुखशास्त्र कथाया च फलेन समतां जयेतः श्लोकादं श्लोकपादं वा नेतो भागवतोद्भवं परस्य स्वसुखेनैव यदिशयित परां गते वेदादिदे वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च तर्हि भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशातं प्रयाग च काल संवत्सरात्मक ब्राह्मणश्चाग्निहोत्रं च दुर्भिः द्वादशी तथा तुलसी च पठन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्तथा प्रागेण पृथग्भावो ईष्यते यच्च भागवतं शास्त्रं वाच एतर्थतो निशम् जन्मकोटिकतं पापं नश्यते नाथ संशय श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेद भागवतं च या नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूया समेधयो उक्त उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरचिन्तनं तुलसीपोषणं च बोधिर्णं सेवनं समन्तकाले तु येनैव सूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं योगिन्दोऽपि प्रयच्छति देवसिंहं युतं चेत् तद् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम् अजन्ममात्रमपयेन चठेन किञ्चित् चेतं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्चखरवद्वततेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजो जीवच्छवो निगदित सतु पाप कर्म येन सुतं सुख कथा वचनं न किंचित् जगतं नरं पशु समं भार रूपमेवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्यं दुर्लभेवो कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लक्ष्यते तेन योग निधि धीमनुशोधभ्यास प्रयतता दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतं अशक्यत्वात् कलौ बौद्धो विशेषोऽत्र सुखागय मनोवैत्रिजय चैव नारायणेमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुं शक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम् श्रद्धातः श्रवणेन तम् आगे तावद् यद्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कथं मनसच्चाजयाद्योगात् पुंसां चैवायुषाच्छयात् कलेर्दोषा बहुत्वा च सप्ताह श्रवणं मते यत्फलं न तपसा न योगेन समर्थनः अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत यज्ञात् गर्जति सप्ताहो गर्जति बलात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्तीर्थ नित्यं हि गर्जति
किं भुवो गर्जनं तस्यारे गर्जति गर्जति शौनकोवाच साश्चर्यमेतदकथनं कथानिकं ज्ञानाद् धर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतौ पुराणौ जातौ कुतो योगविदादसूचकम् यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यता एकादश परेशत्यात् युद्धो वाक्यं ब्रवीत उद्धवाच त्वं तु यस्यामि गोविन्दं भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महति चिन्ता नो श्रुता ओम उद्धवाच तं तु यस्यामि गोविन्द भक्तकारं विदाय च मच्चित्ते मयति चिन्ता तं श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कलिरघोरो भविष्यन्ति पुनः कला तत्सङ्गेन वसन्तोऽपि गविष्यन्तु गतं यदा तदा पार्वती भूमिर्गोरूपेयं समाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते ता त्वत्ततः कमललोचनात् अतः तस्योदयं कृत्वा भक्तवत्सलमाभजा भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मय तद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणापासने कष्टमता किञ्चित् विचारय एतोद्धववचः श्रुत्वा प्रवासे अचिन्तयद्धरि भक्ता मलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेत च स्वकीयं यद् भवेत्तेजत्तच्च भागवते ददाता तिरोधाय उपविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनेयं बाणमहीमूर्ति प्रदच्छा वर्तते हरिसेन सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशने सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योपधिकं गतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽय मीनतः दुःखदारिद्र दुर्भाग्य पापापेक्षारणाय च कामक्रोधाजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरत अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपसदस्तजा कथेत्याज्या भवितपन्दी सप्ताहोतः प्रकीर्तता श्रुतवाच एवं न गाः श्रवणोरुधर्मे प्रेकाश्यमानेरसभि सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदोच्यते संसृणुतौनकत्वं भक्तेषु तौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति चागतां भागवतार्थभूषां स्वचारो वेषां ददसो ओ सदस्या कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामित तर्कयन्तो ऊचु कुमारा वचनं तदाने कथा ततो निसपतताधुनेयम् एवं गिराशा सतता निशम्य शरद कुमारं निजगादनम्र भक्तिरुवाच भवदभिरद्येव कृतास्मि पुष्टा कलेपणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना भवन्तु बाह्याम् अविदं तां गिरिमोचरे ते भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री प्रेमैकधत्री भवरोगहन्त्री सातं चतिष्ठ ससुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि ततोऽपि दोषा कलिजा इमे त्वं द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति सदा निसन्नाख हरिदास चित्ते सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हरि तेषां श्रीहरिर्भक्तरेका हरिरपि निजलोकं स्वधातो विहाय प्रवशति हृदि तेषां भक्तसूत्रोपनद्य भ्रूमोदते किमिदकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवता विदस्य यत् संश्रयान्यगदते लभते सुभक्तासु तापि कृष्ण समितामलमन्यधर्मै ओम जय जय श्रीमद् पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति कृष्ण निवर्तनम नाम तृतीयोऽध्याय पाठ फलः श्रीकृष्णः चरणारविन्दार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अथ चतुर्थोऽध्याय श्रुतवाच अथो वैष्णव चेत्तेषु दृष्टा भक्तिमलौकिकं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सला वनमाली घनश्याम पीतभाषा मनोहर काञ्जीकलाप रुचिरो लसन मुकुटकुण्डला त्रिभङ्गल तच्चारु कौसुभेन विराजता कोटिमन्मद लावण्यो हरिचन्दानु चर्चिता परमानंद चन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आविवेश सुभक्तानां हृदयान्य मलान च वैकुंठवासनाये च वैष्णवा उद्दवादया तत्कथा श्रवणार्थं ते मूढरूपेण संसदः तदा जय जय राव रस पुष्टिर्लौकिके पूर्णप्रसून वैष्टे च मुहुः शङ्करोऽप्य भूतः दृष्टा स तन्मया वस्तां नारदो वाक्यं ब्रवीत आलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वर सप्ताह जन्योदविलो
लोकयतो मयः मूढा सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति न तो निलोकेन ननु नास्तिके जय चेतस्य सौधाय कलौ पवित्रम् अघोघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानौ भुवनास्ति चान्यत् के विशोध्यन्ते वदन्तु मयि अवसरताः यज्ञेन कथामयेन कृपालभैर्लोके हितं विचार्य प्रकाशता कोऽपि नवीन मार्गः पुमानचुः ये मानवा पापिकतस्तु सर्वदा सदा दुराचारयता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कटला च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौपनन्तरे सत्येन हीना पितमात्र दूषकास्तस्ना कुलश्चाश्रमधर्मवर्जिता ये दाम्भिकामसरणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौपनन्तरे पंचोग्र पापा छलछद्म कारणा क्रूरा पिशाचा एव निर्दया च मे ब्रह्म सपुष्टा व्यभिचार कारणा सप्ताह यज्ञेन कलौपनन्दते कायेन वाचा मनसा विपादक नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाहटेन ये परस्वरोष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौपनन्दते अदते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण तस्मिन् सत्यसत्कर्म तत्परः आत्मदेव परे तस्मिन् सर्ववेदविषादात् सोत स्मार्ते सुनिष्णातो विद्युतीय एवं भास्करा भिक्षको वित्तवान् लोके तत्प्रिया द्वन्द्वले स्मृतः सौभाग्यस्थापिक नित्यं सौन्दर्यं सकलोद्भवालोकावार्तारता क्रूरोपायशो बहुजल्पका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणां कलह प्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयो अर्थः कामस्तयोरासन् सुखाय गृहादिकं पश्चात् धर्मा समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवाससि दीनेभ्यो यच्छतः सदः धनातं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो चापि वा पुत्री तथा चिन्त्रा तुरोवशम् एकदा साधजो दुःखात् गृहे त्यक्ता वनं गतः मध्याह्ने तशतहो जातः तडागं समपेयवान् पीत्वा जलं निषण्यस्तु प्रजा दुःखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कच्चिदा गतः दष्टापीतजलं तं तु विप्रो यात तदन्तकं भत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसनः स्वस्थतः पुरः बलिरुवाचः कथं रोदसे विप्रतं काते चिन्तावले बलियसि वदतं सत्तरं मह्यं सस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि चेदुःखं सर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णामुपभुञ्जते वदत्तं चैव गह्यन्ति प्रीत्य देवादिजातया प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणस्तक्तुर्महागतो जगजीवितं प्रजाहीनं दिग्रहं च अप्रजां विनः जगदनं चानपत्यश्च धिक्कलं सन्तते विनः पालते या मया धेनु सा वन्द्या सर्वथा भवेत सो मया रोपितः वृक्षः सोऽपि वन्द्यस्तमाश्रयेत् तत्फलं मदग्रहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यान् पदस्यः किमतुः जीवितेन मे यदुक्ता सारोद्धोचै तत् पार्श्वं दुःखपीडिता तदा तस्य यतश्चेत्ते करुणाभूत् गर्यसिः तदभालाक्षरमाला च वाधयामाश योगवान् तदभालाक्षरमालां च वाचयामाश योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यते पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं यतिर्वाच मुञ्च ज्ञानं प्रजारूपं कलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्या संसारवासनां क्षणो विप्राग मया तेद्य प्रारब्धे तु तलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्री चैव नैव च सन्तते सगरहो दुःखमवापाङ्गं पुरा तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखं ब्राह्मणवाचः विवेकेन भवेद किं मे पुत्रं देहि बलादपि यो चेत्यजाम्यहं प्राण तदग्रे शोकमूर्जिता पुत्राद सुखहीनोऽयं सन्न्यासः सुखम् एव हि गृहस्थः तरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः
यदि विप्राग्रहं दृष्टा प्रभविष्य तपोधना चित्रकेतुरगताकष्टं विधिलेखमिवाजनात नायाशसे सुखं पुत्रा दत्ता देवो हतोद्यमा अतो हटेन स युक्तोऽसि आथनं किं वदाम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं च दत्तवानः इदं वच्चय पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधिः स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रेत निर्मल एवमुक्तादयो योगी विप्रस्तु गृहमागता कन्यः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं याता सकोत्रा सुता तरणि कुटलः तस्य पत्न्यः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तकोत्रा सुता तरणि कुटलः तस्य संख्याग्रे चाररोधः अहो चिन्त्रा ममोदपन्ना फलं चाहं न वच्चये फलवच्छेन गर्वस्यात् गर्वेणोदरवर्धता स्वल्पवच्चं ततो सत्रिगृहकार्यं कथं भवेत् देवाद्घाटी भवेत् ग्रामे पलाये गर्वणि कथं सुखवन्नवः चेदगर्वस्तौ वोच्छे कथमुत सजेतः त्र्यकः चेदागतो गर्वस्तदा मे मरणं भवेत् पशुते दारुणो दुःखं सुकुमारी कथं स महे मंदायां मयि सर्वस्वं ननन्दास हरित्तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदस्यते लालने पालने दुःखं पशुताया च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम् पत्यपृष्टं फलं भोक्तं चेते तयेतम् एकदा भगनी तस्य तद्ग्रहं स्वेच्छया गतः तदग्रे कतदहं सर्वं चिन्तयेयं महति हि मे गर्वला तेन दुःखेन यानुजे कर्मण किं स ब्रवीण मम गर्वस्ते तं दास्यामि प्रसूतित तावत्कालं सगर्वे भो गोप्ता तिष्ठा गृहे सुखं वेत्रं तं मतपतरे यच्छ सते दाशति बालकं सानुमासको मितो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयधेन्वैतो परीक्षार्थं तु सांव्यतं तत्तदाचरतः सर्वं तथैव अस्ति स्वभावतो अथ कालेन सा नारी पशुता बालकं तदा आनीय जनकहो बालं रहसे धुन्दली ददौ तया च कतदहं भद्रे पशुता सुखमर्वकः लोकस्य सुखमुदपन्नः मात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं दजातेभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र पोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे विविधवाक्यं तन्यं नास्ति कुचे ममः अन्यस्तन्नेन निर्दुग्ध कथं पुष्णामि बालकं मदा श्वासोच्च पुसूताय मृतो बालस्तु वर्तते तामकारं गृहे रक्ष तथैर्व पोषयिष्यति पतनः तत्कथं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य दण्डकारीति नाममात्रा शतं त्रिमासे निर्गते चात सधेनो सुसुभिर्वकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकभ्रमं दृष्टा प्रसन्न विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वा आश्चर्यं जनः सर्वे निदर्शार्थं समागतो भाग्योदयो धुनः जातो आत्मदेवस्य पश्यतो दैन्यबाला पशुतस्तु देवरूपीतकौतुकं न जातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतो गोकर्णतं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं न पचाकरोत् यत्कालेन तौ जातौ तरणौ तनया बभूव गोकर्णः पन्यतो ज्ञानी धुन्धकारी महाखल स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोधवर्तित दुष्परिगृहीतां च स्वहस्तेन भोजनं चोर सर्वजनद्वेषी परभीष्मा प्रदीपिको लालनायारभकान् धृत्वा श्रद्धकूपेन पातयतो हिंसकशस्त्रधारी च दिनान्धानां प्रपीडको चाण्डालाभिरतः नित्यं पाशहस्तः सुसङ्गतो तेन वेश्याकुसङ्गेन पेत्रं वेत्रं तु नाशतम् एकदा पितरः ताड्यो पात्राणि स्वयमाहरत्
तदपिता कृपणः प्रोच्चये धनहीरोदरोधः वं दत्तं तो समीच चीनं पुत्र दुःखदायक प्रतिष्ठामि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्तजामि दुःखेन अकष्टं मम संस्थितं तदानीं तो समागम्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतो बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारा खलु संसारो दुःखरूपी विमोहक तदं कस्याधनं कस्य स्नेहावान् ज्वलते निशम् नाचेन्द्रस्य सुखं किंचन सुखं चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीवन मुञ्च ज्ञानं प्रजारूपं मोहतोत्तरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं विजः तद्वाक्यं तो समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धा पंगोरहं सठ कर्मिणा पततो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्णोवाच देहे अस्ते मासरुधरे अभिमतिं त्यजतो जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशां जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो वैराग्यरसिको भव भक्तनिष्ठो धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां प्रवर्तो एवं सुतोक्तवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनौ स्थिरमतिर्गति षष्ठवर्ष युक्तो हरेरनुदिनौ परिचर्यासौ श्रीकृष्णमापनीतौ दशमस्य पाठात्। ओ षष्ठी पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महातम्बे विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्याय पाठ फलः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नंदादि गोकुलत्रात दाता दारिद्र्य दुख भंजन सर्वमंगल दाता च सर्वकाम प्रदायक। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ठाकुर श्री गोधननाथ जी की कृपा से हमारे यजमान श्री वशिष्ठ गोत्रायो श्री दिनेश लबानी नाम ने यजमान के सकल मनोरथ की पूर्ति हो। ठाकुर जी उनको आर्थिक मासिक व्यवसाय रूप से समृद्धि प्रदान करें और ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी अपने श्री चरणों में अचला भक्ति उनको प्रदान करें। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। आज के लिए इतना ही। संध्या वेला में दिन मुद चुका है, सूर्यास्त है चुका है। आज यही विराम दें। कल फिर श्री भागवत जी को पाठ को श्रवण आपको कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।